with our daily lead code challenge. And today's question is, guys, very good, because this is a basic problem asked in various Microsoft interviews. So guys, please watch this video till end and subscribe my channel. Okay, let's start the question. Longest palindromic substring. Given a string s and we have to return our longest palindromic substring. बेसिकली सब स्ट्रिंग हमें जो है रिटर्न करनी है अपनी स्ट्रिंग में से, जैसे बी ए डी है हमें, एंड वी हैव टू रिटर्न बी ए बी अ वैलिड सब स्ट्रिंग, और ए बी इज ऑल्सो अ वैलिड सब स्ट्रिंग आंसर. लेट डिस्कस. बेसिकली आई मस्ट से like this is our basic string, and for this basic string I say what are the substring which is palindromic. Palindromic is what, कि if we reverse that string we get the string again. So such type of strings are b a b, and here such type of strings are a b a. Okay guys, so this is our palindromic substrings. Basically when we goes from left to right it is same, and when we goes from right to left it gives us a same answer. So this is our longest palindromic substring. Now in our question there are two conditions. What are that? First is our longest, कि in the whole string it is longest. Second, it should be a palindromic substring. ओके, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कि वो लॉन्गेस्ट है एंड देन पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हो हमारी. सो वी हैव टू कैलकुलेट इट, एंड हाउ वी कैलकुलेटेड, लेट्स सी. सो guys, I must take a example, and as an example I say, like we have taking an example a b a. If we considered one character, that one character in ourselves, this is a substring, and we have also considered as a palindrome. So every character is a palindrome. Like if we take a, it's a palindrome. If we take b, it's a palindrome. Okay guys, so single character is always our answer, but we have to go to the longest. So the first solution which came in our mind is that we have already done a many question about the substring. So basically I just take a vector array. In that vector array I store every substrings, and after for storing that substring we have a time complexity of O of n square, and after taking a list of all substrings, now we check which of those are palindrome, and in checking of those as a palindrome we have multiply a n complexity more. So basically the solution is our n cube solution, which is very high complexity, and our interviewer is not happy with us. So guys, we have to do something, and we have to tackle this situation and how we optimize our solution. Now let's see. First of all, basically I considered a string as a b a. So for palindrome, what our condition? Basically our end are same, है ना? Basically our ends are same. Okay, yes, definitely. So I must say कि we have taking a 2 pointer here and here. This is our start and this is our end. Okay, and we have to check कि is start is equals to end. क्या ये दोनों similar है? अगर similar हैं तो we say yes. And now I check the inner, is our inner substring is also a palindromic substring. If yes, then we add on it, and we have written our answer. Yes, definitely. So guys, basically we have considered that if our s of I
is equals to S of j, we have just included what? We have just included in our dp of array of I, which is our one pointer, our j, which is our another pointer, and we have to do what? Add 2, because these twos are plus, and now basically we have to check for dp of I plus 1 and dp of j minus 1, बिकॉज हमारा वन पॉइंटर स्टार्ट यहाँ पर है एंड यहाँ पर है. हम एक को बढ़ाएंगे एक को घटाएंगे जब भी तो हमें पता चलेगा. ठीक है, इसलिए हम dp ऑफ I प्लस 1 एंड dp ऑफ j प्लस 1 में j माइनस 1 में ऐड ऑन कर रहे हैं. ओके, तो लेट्स सी अ मैट्रिक्स. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ मैट्रिक्स, एंड फॉर दैट मैट्रिक्स आई जस्ट से कि वी हैव कंसिडर्ड our AA. Okay, look, wait a minute. Yes, A, B, A. Okay, similarly here A, B, A, and now I make our matrix box, so we easily do a calculation. Okay guys, this is our matrix, and in this matrix we have to done our basic calculation. So first of all I must say here is our index 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, and we have to know that for the similar indexes, like for our diagonal variables, these are always similar. So in its own, our palindrome, that single character is always a palindromic substring, so I mark it as 1. Okay, no issue. Yes, next after this we have to going further, and for going further we have to check our 0, like here I'm say कि for A we have A, so both our SI and SJ is equals. So what I can make? I make that these two characters are equal, so I add on what? So I add on 2. Okay, next is our A or B. These are not equal, so add on 0. B or A not equal, 0. A and what? A, these are equal, so I add on 2. A and A, ये तो अपना हो गया. Next is our A and B. This is our 0. A and A, this is our true, but for this, for find out this thing, I must say we have on index 3, and for index 3 what we say, basically we have to came forward here and we have to came backward. That's why I considered as dp of I plus 1 and dp of j minus 1 plus add on 2. Add on 2 of what? Add on 2 of is ki si and sj are equal. That's why we have add on 2 in the previous dp storage. So basically this is our 3. Okay, like this we have to fill our matrix, and at last we have to given a result of dp of 0 and dp of 4. Okay guys, so in this way our solution is going. So let's code with us. So we have to open our editor and code it. Okay, first of all what we can do is just simply making a length of our string. Okay, and after taking a length we have to initialize a vector of int of dp of n and vector of int of n 0. And for this basically our dp vector is created.
after making a dp vector, what we can do, as you see, we have making a matrix, and in that matrix we just what, we going to the diagonals, and for that diagonals I must say we have on one diagonal which is our, where difference is our 0, and then we move further where differences increases by 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 till n. Okay, so for making this we have also add a loop like this, difference is equals to 0 and difference is going to add on till n, and here difference is plus by plus. Okay, next is our int I, and what we initialize as int I is equals to 0, and j equals to I प्लस डिफरेंस, कि आखिर हमारा डिफरेंस उसमें हम ऐड ऑन कर रहे हैं, एंड देन हम j को कंडीशन में डाल रहे हैं टू n तक, and then our I is plus plus and j is also plus plus, and this is our looping from the diagonal variable till n. Okay guys, and in that thing what we can do, we just simply check कि अगर हमारा I and j इक्वल है, मतलब हमारा diagonal वाला हो गया, एंड उस समय हम अपने dp ऑफ I and j में सिंपली एड ऑन कर देंगे 1. हमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो डायगोनल वाला होगा वो तो सब, मतलब एक कैरेक्टर तो हमारा सबका एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग का साइज तो होगा ही ना उसका. हाँ जी बिल्कुल. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज अवर एल्स इफ कंडीशन, विच इज दैट कि अगर हमारा डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर हमारा डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हो गया तो हम कह सकते हैं कि अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हुआ है, एंड एट दैट पॉइंट हमारा dp ऑफ i एंड dp ऑफ j में हम कैसे ऐड ऑन करेंगे, इज लाइक अवर si इज इक्वल्स टू sj. अगर हमारा si sj के इक्वल है, ठीक है, देन हम ऐड ऑन करेंगे 2 को, नहीं तो 0. बिल्कुल सही, समझ में आई बात ये भी. एल्स कंडीशन, अब हम अपनी dp को बढ़ाते जा रहे हैं, और इस dp में एल्स कंडीशन में हम सिंपली si चेक कर रहे हैं कि अगर si sj तो इक्वल हो ही हो, साथ में इसके अलावा हमारा क्या हो, हमारा dp ऑफ i प्लस 1 एंड dp ऑफ i प्लस 1 एंड j माइनस 1 वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अगर ये होता है देन हम dp ऑफ i में एंड dp ऑफ j में हम dp ऑफ i प्लस 1 j माइनस 1 प्लस 2 ऐड ऑन करते जाएंगे. आई होप इतना काम आपको समझ में आया होगा. ये हमने बिल्कुल वही काम करा है जो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में हमने शो करा था. ओके गाइज, नाउ द बेसिक थिंग आफ्टर ऑल दीज ट्रबल इज दैट कि अगर हमें यार लेंथ नहीं करनी, हमें लेंथ के साथ हमें जो है स्ट्रिंग रिटर्न करनी है कि आखिर वो स्ट्रिंग क्या होगी. तो यार स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है, तो सिंपली हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी एक स्ट्रिंग आंसर लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, एक तो स्ट्रिंग आंसर लेके चलना पड़ेगा, और एक जो है मैक्स लेंथ, जो मैंने इनिशियली कह दी कि भाई 0 है अभी के लिए. एंड दिस इज अवर कंडीशन ऑफ dp ऑफ i एंड j कि भाई अगर इसमें स्टोरेज है हमारे में, ठीक है, देन मैं इसके अंदर चेक करूंगा व्हाट कैसे जारी होगी, j माइनस i प्लस 1, है ना, सिमिलरली लास्ट वाले इंडेक्स को. ठीक है, और वो अगर ये वाला हमारा जो है मैक्स लेंथ से बड़ा आ जाता है, ठीक है, मैक्स लेंथ नहीं लिखा है ना, हाँ, मैक्स लेंथ से बड़ा अगर ये हमारा आ जाएगा, देन व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट सिंपली एड ऑन दिस लेंथ j माइनस change our length and answer also. So I make a use of app sub str function where we have initialized a I pointer as an initial point to the max length. So by all these trouble, at last we just return our answer. Okay guys, now just run the question.
maybe our net is weak. ओके समवेयर या हमने यहाँ पे डीपी नहीं लिखा है, फिर से रन करते हैं गाइस. ओके ये डीओ लिख दिया है, वेट अ मिनट, डीपी, यस नाउ. थोड़ा सा मतलब लग रहा है नेटवर्क एक बार जल्दी से रीलोड कर देते हैं गाइस पेज को. मुझे लग रहा है नेटवर्क को कुछ दिक्कत आ रही है. ओके गाइस, तो हमारा ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं जल्दी से. And yes guys, our daily lead code challenge is completed, and today we done our 300 days streak guys. So just subscribe my channel, share this video to your friends, and please be